Are you guys tired of your mind doing Zumba where your mental peace is trying to jump out of the window? Yes, I'm talking about the devil here called overthinking. Have you ever wondered why this happens though? I don't know. रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया है जो मेन रीजन है ना ओवरथिंकिंग के पीछे वो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। और हम सबको ये भी पता है कि ओवरथिंकिंग की वजह से भी हम और स्ट्रेस और एंजाइटी हमें हो जाती है, जिसकी वजह से और ओवरथिंकिंग हो जाती है। सो हम इस बहुत ही वियर्ड सिचुएशन में हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, वी डोंट गेट अ जॉब बिकॉज वी आर नॉट एक्सपीरियंस्ड एंड वी आर नॉट एक्सपीरियंस्ड बिकॉज वी डोंट हैव अ जॉब। Pretty ironic, right? Anyways, पता है इनिशियल स्ट्रेस जो होता है ना हमें, उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है। इट कैन बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी, अनसर्टिनिटीज। ओवरथिंकिंग अ कॉन्वर्सेशन दैट यू हैड विद समवन। हो सकता है आपकी किसी से बात हुई हो जिसपे आप ओवरथिंक कर रहे हो ये सोच के कि पता नहीं सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा होगा। बिकॉज एट टाइम्स यू नीड वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स टू मेक योर सेल्फ फील बेटर। हो सकता है आप फ्यूचर को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे हो कि पता नहीं फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस टफ सिचुएशंस। मेरा सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट है, वो ये है कि ओवरथिंकिंग के पीछे हमेशा कोई एक डीप रूट कॉज होता है जिसे हमें फाइंड आउट करना है, एलिमिनेट करना है। वी नीड टू फिक्स दिस रूट कॉज। You know what? Overthinking is just not thinking too much. It's thinking mindlessly, aimlessly, purely based on your assumptions. And these assumptions are the main reasons that causes stress. It's not your thinking, it's these assumptions. Because these assumptions are by default, most of them are negative. चलो, let me explain this to you by giving you an example. जब आप मैथ्स की कोई इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आप सोचते हो, right? But why doesn't that feel as overwhelming as when you're overthinking? Good question. Because in this case, you have a certain path to follow. आपके पास कुछ information है जिसके basis पे आप सोच रहे हो, अपने assumptions के basis पे नहीं सोच रहे हो। और अगर let's say आपके पास information नहीं है, तो you can open your book, gather the information and solve it. Sounds very simple, right? If you think about it, सच बोलूं तो इस मेथड को आप अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से आप ओवरथिंक कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर बोर्ड रिजल्ट्स, तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन फाइंड दी सॉल्यूशंस एंड कैलकुलेट योर अप्रॉक्सीमेट मार्क्स। इजी पीजी। That was easy. बट भाई हमारा ब्रेन इतना सिंपल कहाँ है, इसके बाद में हम और भी सोचने लग जाएंगे कि पता नहीं लोग हमारे रिजल्ट के बारे में क्या सोचेंगे, मुझे कहीं एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड हेल लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जिसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड दिस इज द साइकिल वी आर गोइंग टू ब्रेक नाउ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 प्रैक्टिकल वेज जिससे आप ओवरथिंकिंग करना छोड़ सकते हैं। यू कैन स्टॉप ओवरथिंकिंग देन एंड देयर इटसेल्फ विदाउट एनी मैजिकल मंत्रास। द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज चैलेंज योर थॉट्स। Challenge accepted. Get a notebook and a pen, or let's say use your phone's notepad, or if you're not that good in writing, let's say just use your phone's voice recorder. The aim here is we need to channelize your thoughts into something physical. So you can use whatever you find convenient. Now go back to what you were overthinking. Write it down. Talk it out. You will observe that your thinking process is slowed down. Do it until you have poured out everything in your mind. लात मार के भगा दिया। एंड एक बार जब आपका लिखकर हो जाए, देन जो भी आपने लिखा है, रीड इट एंड चैलेंज योर थॉट्स। लेट्स से आपने लिखा है दैट एवरीवन हेट्स मी। ट्राई टू राइट एवरीथिंग दैट यू लाइक अबाउट योरसेल्फ एंड पीपल हु एक्चुअली लाइक यू। मैं अपनी फेवरेट हूँ। What we are trying to do here is we are countering your negative arguments with the positive facts, not positive arguments. Because arguments का क्या है? Arguments fade away हो जाते हैं टाइम के साथ, but facts change नहीं होते, right? You're goddamn right. The second thing is organize your thoughts. चलो एक गेम खेलते हैं। Put a 1 minute timer. अपने फोन पे ना 1 minute का टाइमर लगाइए and write down everything, every possibility related to the problem that you often overthink. चलो करो। हाँ अभी करो, मैं वेट कर रही हूँ। हो गया? Yes, sir. अब ना एक
एक और मिनट का टाइमर लगाओ और ये सोचो कि एक्चुअल में जो आपने पहली पॉसिबिलिटी लिखी है, अगर वो सही में सच हो जाती है, इफ इट बिकम्स ट्रू, तो आप क्या करने वाले हो ये आप सोचिए। हाँ, अभी सोचो, वीडियो को पॉज करो, डू दिस एक्सरसाइज, ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। रिपीट इट until you clearly know what all can possibly happen and what are you going to do in each of these cases to make the best out of it. And this process will eliminate all the uncertainties. I'm not saying that everything is exactly what you think it is, but this is the information that we have. एक बार आपने सारे possibilities और risks के बारे में सोच लिया ना, तो कुछ बचेगा ही नहीं सोचने के लिए। ओ चिंता करके क्या पाएगा। और अगर इसके बाद भी कुछ बच जाए तो उसे भी लिख लो। राइट डाउन व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर यू टू रिएक्ट इन दैट सिचुएशन एंड मेक श्योर दैट द टाइमर इज स्टिल ऑन सो दैट यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। एंड द थर्ड वन इज turn around your physical state. This one is a quick solution to calm down your mind. In fact, you may want to do this as the first step and then move on to the other tips that we have discussed. This is the last one, even though it is very effective, but it is a little temporary. So whenever you find yourself stuck in that loop, get up and do some physical activities like some quick run or skipping or take a cold shower. So when you change your physical environment, your mental state changes as well. I mean, can you imagine about wondering of someone else's opinion of you in the middle of a push-up? नहीं। I don't think so. So once you get that blood running in your mind and body, the best thing to do is to meditate and then do the other two tips that I discussed with you. And there is no way that you're overthinking after that. If you want to make sure that you don't fall in this trap in the long term, be self-aware and mindful. If you don't know what's going on, you can't fix what's going on. So this is what these traits will help you in. So when you have self-awareness now, you will start noticing the patterns. जैसे आप कब overthink करते हो, क्या चीज आपको trigger करती है to overthink, किस चीज के बारे में आप overthink करते हो. You will understand yourself better and you will understand the reasons that why do you overthink. And once then you know the root cause, we can work on that root cause and say goodbye to it forever. Feel a little better? If it does, make sure to smash the like and subscribe button before you go on to throw these useless and negative feelings out of the window. Oh, window से याद आया, भाई mental peace, रुक जा, solution मिल गया.